Baseball can develop flexibility and develop a method beyond let's have a flatty and let's chase on a flatty. Yeah, it's really bizarre because twice last year they lost. They had two of their top four biggest ever defeats in terms of runs. One in New Zealand, one in India. So one was in can't think where in New Zealand, might have been Wellington. The other one was in Rajkot. And so both times losing by more than 400 runs. Today they lose by 336. I guess it could have been more. It wasn't. You think about how the game's panned out. India have just battered them into the ground with batting, and then the bowling was just outstanding, and they caught relatively well, much better than what they did in the first Test match. And England's were 5 for 80 twice. And they made 400 in the first innings, yet two guys put on 300. It's so discombobulating, like how the team plays. Like when it fails so spectacularly that they have been absolutely flogged in this game. It doesn't mean anything because the new game starts in 5 minutes, but it's just weird because they played so well, in large moments in the first Test match, and they Bryden Carr bowled excellently yesterday, and that partnership between Smith and Brooke was outstanding. Apart from that, there's not a moment in the game where they've looked competitive. And I think that's like this whole the way they play, it dizzies, it discombobulates in the in positive ways and in negative ways, right? And and so people are right to ask the question, like, if you're capable of such heights, how are you capable of such lows as well? And I note that there's this ongoing conversation about like define baseball and what it is. They don't like what it's called and stuff. And obviously we're sort of pseudo internet correspondents from Australia watching in from afar. We're not inside it, but like some people say baseball is just aggressive batting. Others like take these more ethereal views of like it's being the best version of yourself. Like to me, as far as I can tell so far, baseball is just like a rejection of doing boring stuff in cricket. Like it's just don't lower yourself to or like don't ever get caught up in grinding in the game. Like whatever you do, either be pursuing wickets wildly, batting at pace, and in fact what that does, although it looks like entertainment, it attaches you to rigidity of style. Like, and I think that's where like is baseball 3.0 like sometimes going, we have to defend. Can defense be part of the way that they bat? Because like I look at this, they're 80 minutes from the close of play. There's 80 minutes of this game where England was wasteful and trying to generate innings and giving runs away and dropping catches or batting with they got 4 and over today, like batting with a fluidity that might where maybe taking some time out of the game might have helped. But there's just like a fundamentalism and evangelism and rigidity to the way they play, where it's like we refuse to do boring stuff because we're trying to create a different emotional landscape with the game. And I think that can cost them a result sometimes. But, maybe that evangelism is responsible for the success as well. But cultural differences in Australia, like there's things that you watched today in the last few days where you're like, oh, please put your head down just for a bit. Mate, totally, yeah. So, like, I just think about a couple of dismissals today. Now, like, so there's still 27 overs left or something, max, bad light possibly, could have, probably would have been fine. 27 overs and a second new ball, right? So, a couple of dismissals this morning from Pope and Brooke. Yeah. Decked fucking miles. Nothing you do. Nothing you do. Yeah. Now, like, when I saw, like, Chris Wokes, still, like, there's still probably 2.5 hours left in the day, still a long time, just pop one up the chute, and like Stokes talks about how Jamie Smith, who batted really nicely for 88 today, he pumped, was it Krishna he pumped, or was it Akash Deep? I can't remember, was it Siraj? It was one of them. For 2 sixes in a row, and you just knew he's going to pump him. He was going to bump it short again. There's 3 guys out in the hook. Next one sticks in the wicket a bit. Caught it deep back at square leg. Stokes talks about he wanted to. If he wanted to bat time, he wanted to bat the way he bats, right? Yeah. Like he said that in as many words. And like, I wonder if anyone's challenging that, being like, yeah, but if you get in and you block the shit out of it, it looks really hard to get out. Now, like, maybe there was enough time, and I've just said like they have been flogged, and they have been, but I just wonder, like, at no stage was the draw on today. Yeah. So he was saying that in the press. He was like, we had 80 overs to bat today or whatever. I mean, it didn't look like they were batting with like a gun to their head to really
like stave off defeat. But, Right, yeah. The thing I come back to with this game in particular is like is the decision at the toss and that commitment to chasing. I would like to know more about why the chasing is so critical to the game style, because like if they had like so much of chasing in the final innings requires a zealous belief and trust in what the day 5 deck is going to do, or like day 4 or day 5, and like classically in Test cricket, it is the day where the pitch misbehaves most. I know he's in lockstep with the ground staff, but like what they turned up to see today was like was a day 5 deck, and they were completely not cut out for it. So like why can't he bat in those conditions, take what's in front of him and get it done from there? What is it? Does it not get? Is there no metaphorical erection for the team unless they stalk the horse and chase it? Yeah. I mean, they've shown the ability to refine, and I think you've got to say this as well. It's like in India. Like, anytime you lose at home and you're one of the big 3 teams, knives are out, because it's like you've just got to win all the time, right? I mean, look at Australia. Like, the feeling today doesn't seem to be as hectic as Australia in Perth, right? Like when they lost. But let's have it right. Like, it's a 5-test series. England's lost 1 game. Yeah. I will be curious to see at Lords whether the deck is even flatter to avoid the day 5 thing, and like how they choose to play that. It's probably too late now to change it. I feel like it takes ages to prepare a deck, and then like as in like months. So I mean, but it is interesting with Bumrah coming back. You know, like India's just pumped England, and they get their best player back. So I guess it'd be interesting to see what happens. Oh man, interesting times ahead. And do you know what? Like, I mean, we haven't said one funny thing on the show, which is I think it's us trying to figure it all out, right? And I think the truth is that India were fantastic in this game, and England were somewhere between diabolical and mediocre. Yeah, I just think there's a wastefulness when Stokes is wheeling and dealing to like get certain innings done, and he's putting the field back, or he's holding bowlers back for next game, or the batters are neither defending nor attacking like they were today. They're still going at 4 and over. Like there's it's like those margins of the game, they all add up at the end of the day. Whereas I think baseball sort of relies on like a couple of guys to do something incredible on a flat deck. So again, throwing forward to the Ashes, like I just wonder how much the way these guys play is very conditional on like on specific types of wickets. Yeah, you know, because they get a tough one today, and it was like, what do we do now? Yeah. Now at the same time, we did see Jofra warming up in a singlet vest. So and I got to say, put a price on that, you know? Well, and they serve tea in the press box as well, and I think that you can't. You can't question the PR effort. So you know, I'm being serious. Like England were on the brink of defeat, and they said, "Joff, can you come and warm up, please?" And he has a jacket on. He's there with Tim Southee as well. He has a jacket on. He goes by the boundary, and they asked him to take the jacket off, and then you're seeing it. You're seeing the rig in full glory, and you're going, I like this. Well, okay. Yeah, can you take your singlet off now, Joff? I see what you're doing. Yeah, and maybe the shorts as well. Yeah. Hey Tim, you too as well, mate. That's all right. Good looking rooster. Now we are wrapping up here from Birmingham. It's been a great. How long have we been here for? It's about a week, I suppose. Again, thank you so much to the people that came to see us live in Birmingham the other night. Thank you to Jimmy Anderson. He's definitely watching this show and not playing county cricket right now. And for those, we'll be in London tomorrow. The first thing you said on stage, I'm sorry. The first thing you said on stage was, I'm not listening to your podcast. So, but others say it's okay. So there is that. But it's been wonderful to be back here at Edgbaston. We have a personal fucking weird record, Pezza, where we've been here 3 times and England have lost every game. And this was formerly like they barely lost the Fortress. We've come to the Fortress and never seen England win. So that means that we play for the team. Isn't that interesting for you guys at home? When people talk about this? And I actually count the number of tests I go to as well. Yeah. Anyway, so there's that. But just a big thank you to Birmingham for your hospitality, and we'll be in London tomorrow, as I said. And come along and see us live in London on Sunday, day 4. Lords. Asked TDC from the Pigs. Bingers Pingers says, is the genius of Stokes too much for my simple Australian mind to comprehend? Possibly. You're just a dumb oaf. Yeah. Well, that's true. Steve Smith's eye paint says, I've always loved Mohammad Siraj, and I won't hear a bad word said about him. Won't hear a bad word said about him. Well, he took an absolute screamer today, and then lost one in the wind, and let me tell you, it's barely windy out here. So, actually, take it back. Is this tough chance? Is this 5D chess by the Poms to lose against India and trying to get us to underestimate them for the Ashes? 5-0, fuck off, nonetheless. Yeah. I think if England, if England won this series 5-0, our
country would manage to underestimate them. I really believe that. If we lost in the West Indies 0-3, we would still underestimate sweep England. that under the old rug. What I do think is interesting is I'm not sure if anyone's figured out what this means for the World Test Championship. Well, that was a question Higos did consider asking Stokes. No presser. Baggy Greens at Wimbledon says, why did the curators do Stokes dirty like that? That's the real question. In terms of head on pike, I can actually see the groundsman's head's been put on the pike over there as we speak. Creatino Best says... not bad. England's loss was a better result than Australia's win. I mean, Australia won. Yeah. Cock a hoop. Monday morning back in Australia. A nice bus trip to work, that is. Yeah. Well, we will have the result of Australia-West Indies, or at least I hope we do. Because if we get to the end of the day and there isn't a result yet, then it's getting close. But so far, so good. All right. Well, thanks once again for joining us here on TJC. When you see you guys later tonight. Cheers. इंडिया इंडिया इंडिया, गेल गेल गेल, ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो कप्तान गिल की युवा भारतीय टीम ने जो कारनामा किया है इंग्लैंड में, काबिले तारीफ है। देखिए, सवाल उठ रहे थे, क्या बेसबॉल के सामने भारतीय टीम ठहर पाएगी? क्या इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट के साथ, जो बुमराह भी नहीं खेल रहे, कुलदीप भी नहीं खेल रहे, क्या 20 विकेट निकाल पाएगी? सबके जवाब दे दिए, और किस तरह से जवाब दिए, वो सबसे हार्टनिंग बात देखने को मिली है। कप्तान गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया बतौर बल्लेबाज। अगर आप देखेंगे तो एक ही मैच में 250 भी बनाना पहली इनिंग में, फिर 150 बनाना, पहला बल्लेबाज बन गया। और जिस तरह से सुनील गावस्कर साहब के बाद एक इनिंग में 200 और फिर 100 बनाने वाला बल्लेबाज भी बन गया। कप्तान की जो पारी खेली है, 4 इनिंग में 500 से ज्यादा रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया। ग्रैम गूच के बाद एक ही मैच में 430 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया। नंबर 2 की फहरिस्त पे खड़ा है। लारा साहब को भी पीछे छोड़ रहा है, बाकी बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ रहा है। सो रिकॉर्ड की झड़ी तो लगा दी है, लेकिन जो कंपोजर दिखा है, जिस तरह से बैटिंग की है, वो काबिले तारीफ है। डिफेंस बहुत जबरदस्त देखने को मिला है, और साथ ही में जो भूख है रन बनाने की, वो बहुत एविडेंट थी कप्तान गिल की बल्लेबाजी में। लेकिन जिस तरह से गेम को चलाया भी बतौर कप्तानी, ये बहुत बड़ी बात देखने को मिले इस मैच में। क्योंकि देखिए, कप्तान गेम पे तो सवाल थे ना कि आप तो एक तो मुश्किल दौरे पे कप्तानी कर रहे हो, पहला मैच आते हो, पहले मैच में 2-3 बार आपको मौका मिलता है जीतने का, मौका गवाते हो, और फिर आप पे सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल ये भी रहता है ना ऑफ द फील्ड कि बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो प्रेस को क्या जवाब देना है, बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर किस तरह से गेम चलानी है। वो सारे सवालों के जवाब आपने दिए। यहाँ तक कि ये भी सवाल उठे थे कि कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे और वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो क्या आप नेगेटिव सोच रहे। ये सभी के जवाब दिलाए जिस तरह से गेंदबाजी को चलाया। जडेजा को सही जगह पे गेंदबाजी कराई, हालांकि इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को तब लेके आए सेकंड इनिंग में जब वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थी, टर्न हो रही थी, तो वहां से उसके लिए तैयार थे, तो ड्रिफ्ट करा के वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस तरह से रोटेशन किया है, फास्ट बॉलर को भी आराम देके दोबारा लेके आए। आज सुबह भी जो रणनीति लेके आए थे, जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल सिराज को गेंदबाजी नहीं कराई, प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराई, आकाशदीप को तो कंटिन्यू कराई है। जो इस छोर से गेंदबाजी कराई वहां पे हल्का सा क्रैक था, तो वहां का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया आकाशदीप ने। सो ओवरऑल गेम चलाने वाला कॉन्फिडेंस। यहाँ तक कि आकाशदीप ने बल्लेबाजी में गलती की तो गुस्सा हुए थे। फिर जब डीआरएस नहीं गया था भारत के फेवर में, तो थोड़े से नाराज शुभमन गिल हुए थे ऋषभ पंत से, उनके एक उप कप्तान से, और थोड़ी ज्यादा मजबूती नजर आई थी उनकी कप्तानी में। तो और सीखेंगे और बेहतर होंगे कप्तानी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और सवाल था ना कि भाई 20 विकेट के बारे में नहीं सोच रही है भारतीय टीम, क्योंकि कुलदीप यादव को नहीं खिलाया है, क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे। अरे भाई, कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने एक्स पे पोस्ट किया था कि भाई मेरा नहीं मानना ये कि अगर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव है ना भाई, जब तक वो लड़का बॉलिंग नहीं करेगा, जब तक बैटिंग नहीं करेगा, आपको नहीं पता है। जब तक पूरी टीम खेलेगी नहीं, दोनों इनिंग में गेंदबाजी नहीं करेंगे, आपको कैसे पता कि लड़के 20 विकेट लेने को तैयार नहीं है या काबिलियत नहीं है ना? दिख गई काबिलियत भाई। विकेटों पे विकेटों की छड़ी निकाल दी आकाशदीप ने। मोहम्मद सिराज ने लीडर ऑफ द पैक वाला काम किया है, जिस तरह से पहले इनिंग में गेंदबाजी की थी। तो ये तो ओवरऑल जब लड़के खेलेंगे नहीं, एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तब होगा ना भाई फिर रिजल्ट की बात। लेकिन पहले से ही आपने मन बना लिया, पहले से ही सवालों के घेरे में डाल दिया, और ये भी मुझे पता है क्यों हो रहा है। ये मुश्किल है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को ना अननेसेसरली हेट मिलती है, बहुत अननेसेसरली हेट मिलती है, जो उन्हें मिलनी नहीं चाहिए। वहाँ पे बैठ के ना कोई नहीं चाहता कि टीम हारे, वो भी चाहते टीम जीते। वो भी वैसे ही डिसीजन लेना चाहते जो टीम के लिए फ़ायदा करे, और दिख गया फ़ायदा। वॉशिंगटन सुंदर को जो खिलाया है
8 नंबर पे बैटिंग करा के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 400 के आसपास 6 विकेट गिरी थी भारत की। उसके बाद 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई वॉशिंगटन सुंदर के साथ। पहली इनिंग में इंग्लैंड ने भी तो 400 रन बना दिए ना। तो यहाँ पे अगर कोलैप्स हो जाता, वॉशिंगटन सुंदर जब बैटिंग करने आए, जो पहली 2 इनिंग में पहले टेस्ट मैच में हुआ था भारत का कोलैप्स, अगर वो कोलैप्स हो जाता तो फिर बराबरी का मुकाबला हो जाता ना पहली इनिंग के बाद। ज़्यादा दूर नहीं होती इंग्लैंड, भारत शायद 450 पौने 500 बनाती। यहाँ पे फिर मौका होता सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करके इंग्लैंड के पास गेम में वापस आने का। वो मौका ही हटा दिया क्योंकि इतनी लंबी साझेदारी हो गई शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में कि गेम से लगभग बाहर कर दिया था वहां पे भारत ने। तो जो दांव चला कैप्टन शुभमन गिल, जो दांव चला गौतम गंभीर ने बतौर टीम मैनेजमेंट वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का, बैटिंग में तो काम कर दिया और बॉलिंग में भी बेन स्टोक्स की बहुत इंपॉर्टेंट वो टाइम पे विकेट ली जब पार्टनरशिप हो गई थी। अगर वो पार्टनरशिप चलती ना, सबको पता है क्या कर सकते हैं बेन स्टोक्स। अकेले दम पे एशेज का मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया के सामने, 100 मार के लास्ट विकेट पे 70 रन बनाने वाला बल्लेबाज है वो, और खुद के शतक बनाने वाला। सो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैच में पूरी तरह से पकड़ बना सकते हैं, और बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने। अब आकाशदीप, ये देखिए सासाराम बिहार का ये बिहारी, सासाराम बिहार इंडिया का ये बिहारी इंग्लैंड पे पड़ा भारी। तो बिल्कुल जो गेंदबाजी की है, देखिए जो सीम है ना, थोड़ी वॉबल आती है, हिल के कभी सीम पे गिरती है तो तेज निकल जाती है, कभी लेदर पे गिरती है तो थोड़ी इतनी पेस नहीं होती है। तो पेस को जज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। हैरी ब्रुक को जो दोनों इनिंग में परेशान करके आउट किया, भाई साहब काबिले तारीफ गेंदबाजी। लेकिन डिलीवरी ऑफ द मैच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। जो रूट को जिस तरह से आउट किया, सबसे बड़ा बल्लेबाज है ना यार, उसको इन स्विंग करके ये दिखाया कि मैं आपको वाइड ऑफ द क्रीज इन स्विंग डालूंगा और फिर लेग साइड पे खिलाऊंगा, उसमें बोल्ड किया। और फिर हैरी ब्रुक को वापस एलबीडब्ल्यू किया, इतनी बड़ी गेंद अंदर की तरफ आई। यार ये तो हाईएस्ट क्वालिटी की गेंदबाजी है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। उसका खेलना, उसका रेगुलर नई गेंद डालना भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है, और उसने वो दिखाया। पंजा खोला, पहला पंजा, बहुत मुबारक हो आकाशदीप, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। छोटे शहर का लड़का पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। और जब वो सेलिब्रेशन था ना, यहाँ का मैं हूँ सिकंदर, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ और मैं हूँ ना, मैं कम काम करके दूंगा भारतीय टीम के लिए। सो बहुत अच्छी गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। ये जो पार्टनरशिप है आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की पार्टनरशिप ने बुमराह को मिस होने नहीं दिया। देखिए बुमराह तो स्पेशल है, कोई दुबराई नहीं है, लेकिन बुमराह का ना होना फास्ट बॉलिंग में आपको बिल्कुल भी कमी खलने नहीं दी ये पार्टनरशिप ने। सो पार्टनरशिप नॉट ओनली विन यू मैचेस बाय बैटिंग बट बॉलिंग ऑल्सो। ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप देखने को मिली थी। और जिस तरह से प्रसिद्ध ने भी वो क्रिस वोक्स की विकेट निकाली, उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। ओवरऑल ये जो जीत है ना भाई, ये यंग इंडिया की जीत है, ये ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाली टीम की जीत है। लेकिन इस जीत ने, दिस इज द टीम ऑफ इक्वल्स, बट शुभमन गिल is standing very tall in the team of equals.